आज नवरात्रे के शारदीय नवरात्रे के जो है प्रथम दिन है। 8 बजे घट स्थापना हुई है। विधिवत पूजा विधान से हमने सारे कार्य किए हैं और अभी इसी तरह से 9 दिन तक, क्योंकि अब के एक नवरात्रा कम हुआ है। 10 तारीख को चौथी और पांचवा दोनों नवरात्रे हैं। कोविड-19 की पालना करते हुए जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं उन्हें सब मास्क लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है और जो भी हम लोग इसमें कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। मंदिर में बिल्कुल अभी सबके लिए प्रवेश है। अपने धर्म लाभ लोग ज्यादा कमा सकते हैं और आकर के जिस तरह मंदिर की व्यवस्थाएं हैं वो सब सुचारू रूप से चलेंगी। मंदिर पे प्रसाद, चरणामृत सब मिलेगा और आज के बाद जो है शाम की आरती 7 बजे से होगी, सुबह की आरती रोज 9 बजे होगी। जितनी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की जा सकती हैं वो की जाएंगी। 2 साल से ये जो नहीं हुआ है, अब लोगों का एक जन मानस में ये है कि माता के जो भक्त हैं उनके दिमाग में है कि भाई माता की भक्ति में, माता के इस नवरात्रों में, इन नवरात्रों का बहुत बड़ा महत्व है। हम भी अपने पूरी जो हमारे पदाधिकारी है, कमेटी है, वो इसमें लगे हुए हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। रोज की तरह से रोज यहाँ आरती भी होगी, पूजा भी होगी, लोग भी आएंगे और अपनी भावनाएं और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। जागरण का अभी नहीं होता है, जागरण नहीं होगा, भंडारा होगा, जागरण नहीं होगा।